Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you guys are doing well and alhamdulillah I'm good too. So welcome back to my channel, welcome back to another vlog, and today is basically a working vlog. In this vlog I'm gonna just show you the behind the scenes, some shapes making, texture arrangement and something like this. So inshallah stay tuned for that. And right now you can see that I'm making shapes of this येलो कॉन्क्रीट टेक्सचर. ये मेरा येलो कॉन्क्रीट का टेक्सचर. अभी मैंने इसकी पोरिंग की वीडियो थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की है जो कि आप नो टॉकिंग ब्लॉग में देखेंगे. और अभी जस्ट मैं शेप्स बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, क्योंकि कुछ जो है वो टॉकिंग ब्लॉग्स भी होने चाहिए, कुछ नो टॉकिंग ब्लॉग्स भी अपलोड करूँगी और टॉकिंग ब्लॉग्स भी होंगे. सो जिसको जिस तरह के भी ब्लॉग्स पसंद हैं वो देख सकते हैं. तो अभी मैंने ये टेक्सचर की शेप्स बनाने में लगी थी, लेकिन मैंने कहा चलें जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस टेक्सचर में मैंने कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं किया. जस्ट इसमें सैंड, सीमेंट और येलो कंक्रीट है जो कि ऑलरेडी है. सो अभी जब मैं शेप्स मेकिंग कर रही हूँ तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी. और दो चीज़ें जो मैं फ़ॉलो करूँगी वो ये कि मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया, ताकि जो है वो एज़ यू नो कि इट्स विंटर टाइम, सो textures take a lot of time to get dry. So I'm just using a little bit of water so that it dry like in 2 or 3 days. I hope so. So this is the first technique that I'm gonna use, and secondly I'm just going to make a small shape because smaller shapes get dry very easily while bigger shapes they take a lot of time. So I'm using this shape and we can check if the consistency is good enough or not. Okay, consistency बिल्कुल ठीक है. It's pretty nice and now I can make the shapes. So एक दो shapes आप लोगों के सामने अभी बनाती हूँ और उसके बाद बाकी जो है वो आप नो टॉकिंग ब्लॉग में देख सकते हैं. अगर तो मैंने उसमें ये रिकॉर्ड किया तो. और बैकग्राउंड वॉइसेस को जैसे आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा बिकॉज आई कांट कंट्रोल दैट. Okay, so I will put the shapes here. Let's make one more. आई होप सो कि ये जो है वो 1-2 दिन में ड्राई हो जाएं. अभी आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे कितने दिन हूँ, 1 दिन शायद और या 2 दिन. बट मेरी कोशिश है कि अगर तो ये टेक्सचर्स ड्राई होते हैं तो मैं इनकी भी फिर वीडियो बना लूँगी, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो फिर इन टेक्सचर्स की आप लोगों को तब वीडियोस देखने को मिल जाएंगी. और इस वक्त धूप बहुत शदीद है, लाइक बहुत ज़्यादा धूप फील हो रही है. चलें ठीक है, अब मैं बाकी की शेप्स जो है वो चुप करके बनाती हूँ और वो आप लोग मेरे दूसरे व्लॉग में देख सकते हैं.